First of all, yeah, I'm excited. But to me, um, film is a film. It has its own language and pattern. Doesn't matter in which language it is. So this typical Bollywood term that I'm not very comfortable with. Of course, it's a very, very important film in my life because the character that I played is a very complex character, and for the first time I'm playing this kind of character. So from that perspective, it's a very important film, and yeah, I'm keeping my finger crossed. So how are you connected with this film, Shab? There's a sweet, nice story because I Which language is the story in? story That's the is a answer. story Yeah, again. The way exactly. film is film, no language is not a Correct, barrier. correct. Yeah, so that's the from where it started. Actually, Onir was in my house in Kolkata. He was planning to do a film with my husband and Juhi, and for that he came to meet my husband, and he just saw me and he just decided that I have to work with her. And after that, I got this version of Onis from his mouth only. And after that, Chauranga happened with Sanjay. He played my husband, bad husband. But after that, Chauranga happened, and after Chauranga, this Shab happened. So that's the journey. Okay. So Sanjay, being a producer also and being an actor, तो कैसे आपने manage किया as a producer also and as an actor also? शब में तो बहुत आसान था बिकॉज मेरी मुंह दिखाई अपेयरेंस है लिटरली इट्स नॉट इवन अ स्पेशल और गेस्ट अपेयरेंस इट्स आई एम कॉलिंग दिस टर्म मुंह दिखाई अपेयरेंस सो होपफुली ऑनर विल कीप अ मुंह दिखाई एक मिठाई का डब्बा वहाँ पे या समथिंग सो शगुन अपेयरेंस बट एज अ प्रोड्यूसर यस वी प्रोड्यूस्ड ऑल आवर फिल्म्स एंड there's a trust factor between me and Onair, so I know जब वो direct कर रहा है मैं relax कर सकता हूँ, whether as an actor or even as a producer. So the journey has been very satisfying, and then when you're working with like-minded people, she's right. When we went to meet Orpita for Chauranga, ये इन्होंने जीन्स पहनी थी और वाइट शर्ट पहनी थी, सीढ़ी से उतर के दरवाज़ा इन्होंने खोला, and suddenly we saw her. And Onir said, I have to cast her in Shab. So it was like casting at first sight, And so from one film, Chauranga, we were also kind of decided for Shab. We were happy that the film was shaped out well, music बहुत अच्छा कर रहा है, and I just hope अब दर्शकों को पसंद आए. So what you made to produce this film? ये एक्चुअली ओनर की पहली स्क्रिप्ट थी, माय ब्रदर निखिल से भी पहले, बस एक सिंपल से भी पहले. सो पहली स्क्रिप्ट थी और वो ये फिल्म बनाना चाहता था, एंड स्टोरी इंट्रीगिंग थी. 5 किरदार हैं और हर कोई के अपनी जर्नी है, अपने चैप्टर्स हैं ज़िंदगी के, जैसे कि अक्सर होते हैं. और कैसे हम लोगों की ज़िंदगी में एक शहर, एक बड़ा शहर, या तो हम उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो हमारा कितना हिस्सा बनता है, वो भी कहीं ना कहीं नेचुरली हम एक ऐसे शख्स बन जाते हैं जिसमें हम उस शहर की भाषा बोलने लगते हैं, उस शहर के उसका इम्पैक्ट बहुत होता है हमारी पर्सनालिटी पे. और शब का मतलब रात है, और वो डुअलिटी जो है रात की और इंसानों की भी मिस्ट्री होती है. हर एक, अभी मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं, आप खाली एक शक्ल और एक नाम और हमने जो काम किया उस हिसाब से एक दूसरे को हम जज करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं. लेकिन उससे कई ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं और उसके पहलू होते हैं. सो शब फॉर मी इज़ लाइक चैप्टर्स विद इन चैप्टर्स. सो इंट्रीगिंग लगी थी कहानी, सो इसीलिए सपोर्ट भी किया प्रोड्यूस करने. So as you said, it is full of mystery. Even we heard कि काफ़ी रोमांटिक और ड्रामा भी इस मूवी में देखने को मिला. रोमांटिक ऑफ कोर्स रोमांटिक है, ड्रामा है, एंड ड्रामा के एलिमेंट्स डिफरेंट है. कहीं
होप है, कहीं डेस्पेयर है, कहीं आशा है, कहीं निराशा है, कहीं उम्मीद है, और हार्ट ब्रेक है, सेंशुअलिटी है. सो वही है कि आइसोलेशन में नहीं देख सकते आप शब को, आपको ये एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी. कई लोग बोलते हैं अच्छा ट्रेलर से ये समझ में आ रहा है. मुझे लगता है ट्रेलर एक हम जज करते हैं फिल्म को ट्रेलर से. ऑफ कोर्स वो पहला मीडियम है जब आप दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन उसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें कन्वे नहीं कर पाते. 90 सेकंड में या 120 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं कन्वे कर पाते, तो वो देखनी पड़ती हैं आपको और एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. जैसे किताब कहते हैं recognize the book by the cover it has, but not really. You have to read the book. It grows with yeah. you. It grows with you. Yeah. So how was your whole journey throughout the shooting and all? Okay, You got the answer. I can tell you my experience with Sanjay as a producer, 2 films, Chauranga and Shab. I have never got such a balanced, matured, calm, and handsome producer. So sweet. Thank you so much. Yeah, that's absolutely true. That's my Let me honest now- introspection. But as an actor, of course, in Chauranga, I got a very limited chance to share screen with him, and actually in that film, I had seen him playing 2 roles. One is actor, where he played the main lead of the film. If you see the film is entirely is on him. So it's a very, very difficult character that he was playing. The way he looks, the way we have been watching him through films so far, it was completely different. And by now we all know how excellently he had done this thing. So while he was doing that thing, he was of course he is producer as well. So every time, from each and every corners problems are coming, and so I have actually seen, I kept I'm telling you So today sweet. that I kept eyes with you, that look at this man, that how he's balancing, because both the role are so difficult to play, but it's just amazing. So I learned a lot actually during Chauranga from him. And Shab also, he was a wonderful producer who have really who have trusted to all of us, the actor, actresses, and Thank of you. course Thank you so much. Thank you so much. मैं कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ हम काम करते हैं, अपने कोलीग्स होते हैं, कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, और बट वो जो उस दौरान जो आप काम कर रहे हैं 20 दिन 30 दिन, दैट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट जर्नी इज़ द गोल, मेरा मानना है. एंड नाउ सेकेंड टाइम ऑफ कोर्स फैंटास्टिक एक्टर. जैसे कि वी आस्क्ड हर, जब तुम इतने साल फिल्मों से दूर क्यों रही, एंड सच टैलेंट, सच ब्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड द स्किल. Cinema has missed you for 10-12 years because she in between left movies, right? 6 years. 6 years, sorry. 6 years, yeah. So it seems Yeah, like 10-12 years, yeah. right? So 6 years. And but waiting for you. completely hassle-free actor. Extremely a dream to work with, honestly. My interaction during Shab was very limited because we were not acting, and Honor was really leading the show. But I remember during Chauranga also, and इनके dialogues भी नहीं थे. The way she would convey so much through expression, it was very, very, and for me, having worked with a lot of actors from Mumbai, I worked with Arpita and Tanishta on the same film, and I just thought that the knowledge and the willingness to go that extra mile was fantastic in Arpita. Yeah, So this really. We got tired appreciating. No. It's lots more to say. उनका कार्ड खत्म हो जाएगा. So जैसे मैम ने कहा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आए मूवी, और काफ़ी आपने टैकल किया. इवन मैम वांट्स टू नो कि कैसे आपने ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल किया, और how you came up with all these things. Yoga day. No, but honestly,
देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं हर प्रोडक्शन में, हमें ज़्यादा लगती हैं क्योंकि हमारे पास बजट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि बजट की लैविशनेस हो तो फिर दूसरी या सो वी हैव दो स्ट्रेसेस, बट एक जो बड़ा स्ट्रेस होता है जो लाइक माइंडेडनेस, लोगों के साथ काम करने का, वो नहीं था हमें। हर कोई मोर देन 100% देता है काम करने के वक्त, और बाकी जो बैलेंसिंग है वो व्हेन यू नो कि तुम्हारे साथ टीम अच्छी है और वेल मीनिंग है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं ड्रेन कर रही है आपसे, सो वो बैलेंस हो जाता है एंड सूनर और लेटर हो ही जाता है बैलेंस। या सो संजय एज अ प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है? But you were giving me only these two options? Not fair. Not fair. तीसरा भी If you चाहिए। want to add anything, you can. Say both together. Yeah, I must tell that first of all, which actually matters to me, it's what kind of person that is. It's very important to me before I work. So, and it goes with Onir and Sanjay both. That it's a real, very rare combination. That both of them are a wonderful person, and that matters a lot to me. Okay. Doesn't matter. I will get him in future as producer or actor, but I would certainly love to have this association as a friend. I just want to keep these two people in my life in whichever way it's possible. So sweet, so sweet. So संजय सर की तो बात होगी, बाकी जो दूसरे कास्ट हैं, मीना जी, आशीष, कैसा लगा उनके साथ काम करके? With Ravina, this is my second film. Before that, we did a Bengali film, and so this is my second film with her. And this film, we didn't share any screen together. There was not such scene, but yeah, whenever I see her, meet her, every time I feel that she's very professional, and of course she doesn't need to prove anything. End of the day, she's Ravina Tandon. We grew up watching Cheeseburger Must. So and I really appreciate two things. One is that the way she's maintaining herself, it's not a easy thing, being a wife, a mother, and playing different roles, and still the way she looks, she carries herself, it's really commendable. And apart from that, whenever both of us we meet, we talk about not film, not anything else, how difficult motherhood is. Yeah, that's it. So lastly, movie release होने वाली है बहुत जल्दी. Yes. क्या कहना चाहेंगे अपने viewers और audience को? Well, so this is my request to all of you, that not only Shab, for all movies, you have to go to theatre, watch the movie, and then you are free to make your opinion. Don't predisposed your mind hearing opinion from your friends, relatives, or read or write up or critics write up or whatever. So that is really not a very good thing to do. And also waiting to see it on any of the digital screen or television, waiting for that is also not good, because film, this particular word film, has to be watched in big screen, and for that you have to come to theatre, have to watch, and then you are free to make your opinion whether you like it or not, but you have to come to theatre to watch it for sure. So what do you want to ask to your fans, viewers and audience? अगर आपको कहानियाँ देखना पसंद है, हर फिल्म में मैं यूजुअली यही बोलता हूँ कि अगर कहानियाँ देखना पसंद है, कुछ अलग किस्म की कहानियाँ, जहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट नीड्स भी सेटिस्फाई होती हैं और कुछ आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश रहती है। शब का म्यूज़िक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आपके म्यूज़िक सुनने के बाद आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस लेवल की फ़िल्म हो सकती है ये इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अगर आप कहानियाँ अच्छी देखना चाहते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो शब ज़रूर देखिएगा। Thank you so much. थैंक यू। Thank you.